Namaskar, good morning and greetings to all our viewers. I am Abhay Kumar and together with my dear friend, colleague and fellow commentator, Dr. Alok Srivastav, I welcome you to this launch event being telecast live from the Mission Control Center at the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, the spaceport of India. We are here to bring to you the live coverage of PSLV-C37 CARTOSAT 2 series satellite mission carrying a total of 104 satellites, 3 of them Indian, and 101 satellites from customer countries, the United States of America, Israel, Kazakhstan, the Netherlands, Switzerland, and the United Arab Emirates. Today's launch will take place at 9:28 a.m. Indian Standard Time from our first launch pad. It is a remote sensing mission with a sun-synchronous polar orbit of 505 km circular with an orbital inclination of 97.46 degrees. The launch preparations have progressed well and we expect a nominal launch today. Today's flight is the 39th flight of the PSLV and 16th flight of the PSLV XL, the most powerful of PSLV variants. In XL, the four-stage core vehicle is augmented by 6 large strap-ons called XL. It is the workhorse of ISRO and PSLV has till date continuous 37 successful flights. I have mentioned that today we are carrying 104 satellites with a total mass of 1375 kilograms. The main satellite is ISRO's own CARTOSAT 2 series satellite. The other 2 Indian satellites are 2 nanosatellites, INS-1A and INS-1B, also from ISRO. Then we have 101 satellites from our customer countries. The stacking of PSLV-C37 in the mobile service tower for the first launchpad complex commenced on 28th of December 2016 with the positioning of core brace shroud, and the final 28-hour countdown to the launch commenced yesterday at 5:28 a.m. Indian Standard Time. The mobile service tower has since been moved away, and you can see on your screens majestically the PSLV vehicle standing on the launch pad ready to be launched. PSLV has a liftoff mass of 321 tons and is 44.4 meters tall. The core diameter is 2.8 meters and the heat shield diameter is 3.2 meters. We are now 25 minutes to launch. नमस्ते आप सभी दर्शकों का मैं आलोक श्रीवास्तव अपने साथी वैज्ञानिक श्री अभय कुमार जी के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के अभियान नियंत्रण केंद्र से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत ही शीघ्र हम आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे विस्तृत रूप से बातचीत करूंगा और ये छोटी सी लघु फिल्म आपके सामने। Roger. X-ray, LP and X-ray. Roger. Telemetry. Telemetry, Roger. All stations stand by. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. From the days of launching sounding rockets in early 70s, India has traveled a long and difficult road to develop self-reliance in the field of space launch vehicles technology. The know-how and the nuances in this field are closely guarded internationally and have been learned indigenously in a hard way. Crossing important milestones like SLV-3 and ASLV, this road has led us to successful development of the Polar Satellite Launch Vehicle. This veritable workhorse of ISRO has now made 37 continuous successful flights, including important missions like Chandrayaan and Mangalyaan. While we have continued to develop heavy lift and advanced vehicles like GSLV Mark II, GSLV Mark III, the capabilities of PSLV have also been enhanced. This has resulted in upgraded version like PSLV XL and development of its ability to launch multiple satellites in multiple orbits.
The PSLV-C2 mission launched 3 satellites. C11 launched 10 satellites. The C34 mission in 2016 launched 20 satellites in a single mission. The PSLV-C37 mission is very special. In order to utilize its full capacity, the rocket this time will launch 104 satellites. Among its large number of foreign co-passenger nano-satellites, it will inject ISRO's CARTOSAT 2 series satellite and 2 ISRO nano-satellites, INS-1A and 1B, each weighing around 9 kilograms, into sun-synchronous polar orbits. This extraordinary mission has been very demanding for the engineering team and required a lot of care in its design. The orbit determination of the satellites at the point of their separation from the launch vehicle will be carried out using onboard NAVIC receivers. INS-1A and 1B will be separated using the recently inducted ISRO wedge lock separation system called IWL-150. It will take around 1006 seconds for the rocket to reach the orbit. The separation process of all the satellites is planned to be captured using 5 cameras of the onboard video imaging system and would take 715 seconds to complete. CARTOSAT is a follow-on mission in the series of satellites, primarily for cartographic applications. The 3-axis stabilized satellite is configured with a mission objective of providing spot images in panchromatic and multispectral bands. The imageries will be used for urban and rural applications, coastal land use and regulation, management of utilities like road networks, water distribution, creation of land use maps, change detection to bring out geographical and man-made features. It will also service various other land and geographical information systems applications. The INS-1A and 1B are remote sensing satellites with specific applications. 88 nanosatellites, each weighing approximately 5 kilograms, called Dove satellites, belong to a US company called Planet, and 8 satellites called Lima belong to Spire Global Incorporated, USA. These satellites are for remote sensing applications. Naif-1 of UAE, Al-Farabi-1 of Kazakhstan, Pias of Netherlands, and Dido-2 of Switzerland are technology demonstrators, while BGU-SAT from Israel is for science application. PSLV-C37 is silently standing on the first launch pad of SDSC Shar, waiting to roar and complete this challenging mission. इस लघु फिल्म के बाद पुनः हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका फिर से एक बार अभियान नियंत्रण केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, परिवर्तन किसी भी विकास की पहली सीढ़ी होती है और यही परिवर्तन इसरो को हर बार नई चुनौती के लिए तत्पर करता है, तैयार करता है। तो फिर से एक बार तैयार है एक नया यान PSLV-C37, एक नई उड़ान और एक नया आसमान। जी हां, चुनौतियों के इस नए आसमान में इसरो हर बार सफलता की एक नई इबारत लिखकर अपनी ही मंजिलों के मील के पत्थरों को थोड़ा और आगे खिसका देता है। दरअसल आज का ये प्रक्षेपण कई मायनों में भारत के अंतरिक्ष की दिशा तय करने वाला होगा। अब तक तो आपने निश्चित रूप से अखबारों या टीवी की खबरों में ये जान लिया होगा इसकी प्रक्षेपण की महत्ता को, और निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज तक भारत कुल 84 भारतीय उपग्रह
59 रॉकेट प्रक्षेपण जिसमें स्क्रैमजेट टीडी और आरएलवी टीडी भी सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों के लिए 8 अभियान, 2 पुनः प्रवेशी अभियान एसआरई 1 10 जनवरी 2007 को और क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर मिशन जो 18 दिसंबर 2014 को छोड़ा गया एवं 21 देशों के लिए 79 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर चुका है। 20 सितंबर 1993 को PSLV ने अपनी पहली उड़ान भरी और तब से अब तक 42 स्वदेशी और 79 विदेशी अर्थात कुल 121 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर चुका है हमारा PSLV। आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक विस्तृत दर्शक दीर्घा जो लगातार हमारे साथ बनी हुई है इस बहुत महत्वपूर्ण प्रक्षेपण के लिए। ये PSLV के प्रोग्राम निदेशक हैं। निश्चित रूप से इन सभी महानुभावों की जो इस समय वरिष्ठ वैज्ञानिक इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके अपने योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ उन सभी 21 देशों के या 79 उपग्रहों के नाम ले पाना तो मुश्किल है, पर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in या www.isro.org पर जाकर बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश के सुदूर दक्षिण स्थित इस छोटे से कस्बे में आधुनिकतम अंतरिक्षीय तकनीक का ये हैं हमारे इसरो के चेयरमैन श्री किरण कुमार सर, उनके बिल्कुल बगल में हैं VSSC के निदेशक महोदय शिवन सर। अब बहुत महत्वपूर्ण क्षण जिसका इंतजार कि मिशन डायरेक्टर द्वारा ऑथराइजेशन इस प्रक्षेपण का। Timing to control, timing in external hold mode. 15 minutes before the launch, that is in about 50 seconds from now, the mission director will authorize the launch. Mission Director Roger. You are going to see in about 40 seconds time the mission director authorizing the launch. Once the mission director authorizes the launch to the vehicle director, then in turn the vehicle director will authorize the automated launch sequence at T-minus 14 minutes. Then the automated launch sequence will start at T-minus 12 minutes, and from then onwards all the controls of the vehicle will be with the onboard systems residing. Now you can see we are coming very close. The mission director is going to authorize the launch. जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण। Stand by for the time mark. Mark minus 15 minutes and counting. और ये आपने देखा उन्हें ऑथराइज कर दिया है। Mission Director. और Readiness of घोषणा। PSLV-C37 vehicle. All 104 satellites, range systems and the TTC systems is confirmed. So the launch has been authorized Clearance is by the mission available director. from Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board, and Mission Director hereby authorizes for launch operation sequence for launching PSLV-C37 CARTOSAT 2 series satellite mission at 9:28 hours today. जी हाँ, जैसा कि All आपने अभी stations सुना, note, Mission Director authorization given for launch. T-15 मिनट पर अभियान निदेशक ने प्रक्षेपण की अनुमति दे दी है और इस तरह से अब आगे की गतिविधियां पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुरूप ही जारी रहेंगी। अनुमति की ये घोषणा प्रक्षेपण यान, उपग्रह एवं भू केंद्र की विभिन्न प्रणालियों के पूर्ण अवलोकन के पश्चात ही की जाती हैं। उसके ठीक 3 मिनट के बाद अर्थात T-12 मिनट पर यान निदेशक स्वचालित प्रक्षेपण अनुक्रम या ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के आरंभ की उद्घोषणा Vehicle Director to ALS console. कुछ ही Vehicle क्षणों Director पहले। authorizes for initiating automatic launch sequence for PSLV-C37 CARTOSAT 2D mission. जी हाँ, इसकी भी घोषणा कर दी गई है और अब ये अनुक्रम का सिलसिला आरंभ कर दिया है। इस घटना के पश्चात यान एवं उपग्रह से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां जो यान है वो प्रक्षेपण यान उससे जुड़े हुए कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे इसरो के चेयरमैन श्री किरण कुमार जी को, VSSC के जो निदेशक हैं श्री के शिवन जी और जो श्रीहरिकोटा है उसके निदेशक श्री कुमिकिरण जी। On your screen now, you can see a short film on vehicle integration. Right now you are seeing the core base shroud and the nozzle end segment of the first stage being brought to the launch pad and lifted to the launch pedestal. The nozzle end segment is very clearly visible and you can see now it is on the launch pad, and then
another 5 segments, total 5 segments of first stage. You can see the second segment being integrated. The first stage is now fully integrated, and now on screen is the propellant tank for our control thrusters. The SITVC propellant control tanks. Here the strap-ons are getting prepared. One of the strap-on is now on the pad. They are now one by one getting assembled. You can see 2 of them are already assembled, and the third, a long shot. Now you can see the second stage being flagged off for integration. This is our liquid stage called Vikas based engine. The second stage is being lifted on the launch pedestal to be placed over the first stage, slowly being lowered down. And as you can see, the second stage now Stand is by for the being time lowered mark. down in the interstage between first and Mark second minus stage. 12 minutes and The counting. second stage is now fully assembled. Automatic launch sequence And initiated for the PSLV-C37 final, CARTOSAT 2CT now you can mission. see the third and fourth stage being flagged off for integration. जी हाँ, ये जैसा अभी अभय कुमार जी बता रहे थे कि 2 चरणों का जो समाकलन है वो हो चुका था, और तृतीय चरण विकास इंजन के जो ऊपर लगा होता है 3.6 मीटर लंबा 2 मीटर व्यास वाला तृतीय चरण में लगभग 7.6 टन ठोस ईंधन HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन भरा जाता है, और इससे लगभग 240 किलोन्यूटन थ्रस्ट डेवलप होता है। और सबसे ऊपर चतुर्थ चरण के ऊपर ये उपग्रह जो हैं इनका समाकलन किया जाता है। अभी आपने कार्टोसैट 2D देखा, उसके बाद INS-1A और INS-1B उपग्रह जो है ये राधाकृष्णन जी हैं जो एंट्रिक्स कारपोरेशन के हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो अडॉप्टर है उस पर सारे उपग्रहों का संयोजन कर दिया गया है, और इस संयोजन के पश्चात ये सारा समूचा जो एकालन है वो हमारे उपग्रह के साथ जुड़ने के बाद यान के साथ जुड़ने के लिए हम अगली बिल्डिंग तक ले जाते हैं। और यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कार्टोसैट 2D को चतुर्थ चरण 1.6 टन अर्थ स्टोरेबल तरल ईंधन आधारित इंजन 3 मीटर लंबा व 1.34 मीटर व्यास वाला चतुर्थ और अंतिम चरण होता है। इसमें तरल ईंधन के रूप में MMH और MON 3 के मिश्रण को 25 टन तरल ईंधन के रूप में भरा जाता है। और इस तरह से जब हीट शील्ड जो पेलोड फेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है उसके जुड़ जाने के बाद समूचा यान प्रक्षेपण के लिए तैयार हो जाता है, जिसे धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से प्रक्षेपण स्थल तक हम स्थानांतरित कर देते हैं। और यह आप देख पा रहे हैं कि हमारा यान पूरी तरह से प्रक्षेपण स्थल पर प्रक्षेपण के लिए तैयार। Mark minus 10 minutes and counting. We are back to live event after the integration film, and it's time to tell you some basic details regarding our PSLV. The PSLV rocket is made of 4 stages, and the first stage of PSLV is called PS1, and it employs our all-powerful S139 solid booster. It has a peak thrust of 4,800 kilonewton, burns for 105 seconds with a specific impulse of 270 seconds. It is 20 meters in length and has 138.2 tons of solid propellant loaded. Each of the 6 strap-ons attached to PS1 is the bigger version of the strap-ons called XL. Each strap-on burns for about 55 seconds with a specific impulse of 266.5 seconds, developing a peak thrust of 700 kilonewtons. They use 12.2 tons of solid propellant and are 1 meter in diameter and 12 meters long. The second stage of PSLV is called PS2, and it employs our Vikas engine with 42 tons of liquid propellants loaded. It has a steady state thrust of 800 kilonewton and burns for about 150 seconds. PS2 is 12.8 meters in length. The third stage, called PS3, again is a solid motor with composite motor case which offers significant payload mass benefits. It has a peak thrust of 240 kilonewtons, burns for 85 seconds to 100 seconds with a specific impulse of 295 seconds. It has a length of 3.6 meters. The final stage, that is the PS4, is using the heaviest. You can see on screen the vehicle director very intently monitoring the launch along with the associate mission director, Shri. I was continuing with your PS4 description. On screen, you can see PSLV all ready for liftoff and undergoing final checks. The twin engine configuration of
PS4 is STS pressure servos fed activated. and has steady MC state thrust of confirms 15 reception of kilonewton sharp and sharp to with data. a specific impulse of 305 seconds. It burns for 506 seconds in this mission as per requirement and is cut off by the vehicle guidance system to provide precise orbital injection. We are now around 7 minutes 35 seconds to launch. जी हाँ, हम लोग करीब प्रक्षेपण से 7.5 मिनट की दूरी पर अभय कुमार जी ने जैसा अभी आपको यान के बारे में बताया, मैं आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं अनादुरई जी जो इसरो उपग्रह केंद्र के निदेशक हैं। उनके बिल्कुल बगल में अभी आप अगर हमारा कैमरा दिखा पाए आपको तो श्री तपन मिश्रा जी बैठे हुए हैं जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक हैं। सोमनाथ जी जो एलपीएससी के निदेशक हैं, ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कुन्नी कृष्ण जी के बगल में तपन मिश्रा जी बड़ी गहरी संवेदनाओं के साथ लगातार मॉनिटर को देखते हुए और चेहरे काफी खुशी से भरे हुए। मैं आपको बता सकता हूं इस समय कि ये तपन मिश्रा जी का बहुत ही क्लोज व्यू आपने देखा होगा, निश्चित रूप से आंकड़ों पर एक गहरी नजर। आज PSLV-37 द्वारा कार्टोसैट 2D उपग्रह का जो प्रक्षेपण है ये पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:28 पर संभावित है। उसी का आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचाने के लिए साथ हैं आपके। कार्टोसैट 2D का वजन केवल 714 किलोग्राम है, मतलब प्रक्षेपण यान की पूरी क्षमता को उपयोग में लाने के लिए अभी और उपग्रहों को शामिल किया जा सकता था और इसरो ने किया भी यही। आज हम आपके इसके साथ ही 2 अन्य स्वदेशी नैनो उपग्रह 8.4 किलोग्राम भारी INS-1A और 9.7 किलोग्राम भारी INS-1B तथा 101 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करेंगे। इन विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 96 नैनो उपग्रह तथा एक इजराइल का BGU-SAT, कजाकिस्तान का अल-फराबी 1, नीदरलैंड का पियास, स्विट्जरलैंड का जायडो 2 और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE का नाइफ 1 उपग्रह सहयात्री के रूप में इस उड़ान में शामिल होंगे। उनकी योजनाबद्ध तैयारी इसरो की वाणिज्यिक इकाई अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के साथ मिलकर बखूबी तैयार कर ली थी। प्रक्षेपण के समय प्रदाय भार का कुल भार 1378 किलोग्राम होगा। इस समय हम करीब 5.5 मिनट की दूरी इस यान से। अभय जी, जैसे जैसे ये प्रेशर बिल्डअप होगा हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि उस तरह की नेल बाइटिंग लॉन्च के समय की फिनिश का प्रेशर हम उन तक भी छोड़ें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक बहुत समीप जाके हम केवल उन्हें वो आवाज सुनाएंगे जो मिशन कंट्रोल सेंटर से आती है। Yes, the way Dr. Alok has told, we are going to give you a feel of the launch All stations as stand by for the time we mark. approach the launch, and as we are Mark about a means 5 minute or minutes so and from the counting. launch, we are going to give you, we are going to keep calm, MC confirms keep reception of our radar voice data. calm, and give you a feel of the whole launch in a manner that befits the excitement which is building up here. बिल्कुल बिल्कुल सही है अभय कुमार जी। वैसे कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए सतत नई तकनीकों के विकास में जुटा इसरो इस बार एक अनूठे अभियान को अंजाम देने जा रहा है। PSLV को हर प्रक्षेपण से विविधता की जिस कसौटी पे परखा जाता है वो इस यान को खरा बनाता चला गया। कभी हमने सबसे लंबी अवधि का प्रक्षेपण का इतिहास रचा तो कभी अनेकों उपग्रहों को एक ही प्रक्षेपण में धरती की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया। पर एक सच्चाई जो हमेशा इसरो के साथ चल रही है वो है आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी का अनवरत विकास, उनका कार्यान्वयन और तदनुसार प्रक्षेपण, यानी उपग्रहों और यानों में समय की मांग के हिसाब से परिवर्तन। यूं तो इस अभियान की खासियत यह है कि अंतरिक्ष के इतिहास में आज तक के एक ही यान में सबसे अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करना, पर यह सब होगा केवल 28 मिनट में। जी हां, ठीक सुना आपने, मात्र 28 मिनट 42 सेकंड में। यह अभियान 9 घंटे 28 मिनट से लेके 10 बजे 2 मिनट 38 सेकंड तक चलेगा। आपको याद होगा कि इससे पूर्व भी इसरो ने 2008 में एक साथ 10 और 22 जून 2016 में एक साथ 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि एक अभियान में सबसे अधिक 37 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व कीर्तिमान रूस के नाम है, जब उसने 2014 में इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था और 2013 में अमेरिका ने 29 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। इस समय लगभग 3 मिनट की दूरी। Just about 3 minutes to launch, and it's time to briefly tell you the flight sequence which this vehicle will follow. At liftoff, along with the solid core, 4 of the 6 strap-ons will be ignited.
Then 25 seconds into the flight, the remaining 2 strap-ons will be ignited. The first set of 4 strap-ons which ignited on ground will separate at 70 seconds and the remaining 2 at 92 seconds into the flight. The first stage will take the vehicle to a height of about 67 kilometers and will impart a velocity of 2.17 kilometers. You can see a full shot now on screen, our specialists looking very intently and monitoring the launch. The heat shield separation will then take place at an altitude of 117 kilometers when the protection of the heat shield is not required. You can see a very close view of the nozzle end of the first stage, where on the pedestal you can see the cutouts for the jet deflectors Mark to minus 2 operate. minutes and counting. And this Phase 2 charging view also completed. tells you now a view of the control center. Again, very intently, the launch is being monitored here. The second stage will go up to an altitude of 219 kilometers, and the flight time by now will be 263 seconds. The third stage will then separate at 492 seconds at an altitude of 428 kilometers. Finally, the fourth stage Mark will means 1 ignite minute, 30 at seconds. 502 seconds and will cut off at 1008 seconds from liftoff, when the initial orbital velocity of 7.6 kilometers is achieved. At this stage, the orbit of 505 kilometers circular has been achieved. The CARTOSAT 2 series satellite is next injected into the orbit and followed by INS satellites. All stations stand by Subsequently, for the time the mark. nanos will be ejected. जी हाँ, प्रमोशन में Mark minus 1 कुछ ही minute and घड़ियां counting. शेष। अभियान नियंत्रण केंद्र में समय जो है वो Minus 55 9:27 seconds. दिखा All रहा है, माने subs हम up. केवल 50 सेकंड की दूरी पर अभियान नियंत्रण केंद्र Minus तथा 50 प्रक्षेपण seconds. नियंत्रण में All सभी विशेषज्ञ sequences are up. उड़ान संबंधी विभिन्न प्रचलनों का बड़ी बारीकी से Minus 45 सूक्ष्मता से seconds. निरीक्षण करते हुए मैं अब खामोशी ग्रहण करूंगा और आप तक Minus पहुंचाऊंगा 40 seconds. ये गंभीर PS2, आवाज VHP, जो PSR प्रक्षेपण opened. तक आपके साथ रहेगी। Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Roger. Minus 25 seconds. PS2 VSPPs are opened. Minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, plus 10 seconds. P3 tracking. A perfect liftoff Auto tracking. as usual for PSLV, Monthly tracking. and you can Plus see 15 seconds. in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons Plus 20 firing well. First stage जी performance हाँ, normal. लगातार हमसे दूर जाता Plus 25 seconds. अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता Plus हुआ 30 जैसे seconds. विश्व की सारी मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत Plus एक 35 ही seconds. संदेश सुनाता हुआ कि सफलता के आसमान असीमित हैं। Plus 40 seconds. 320 टन भारी 44.4 मीटर ऊंचे 45 इस seconds. प्रक्षेपण यान की ये 39वीं उड़ान, जिसमें Plus 50 16वीं seconds. उड़ान है इस विस्तृत संवर्धित संस्करण में। Plus 55 seconds. Now all the 6 strap-ons functioning, and the atmosphere 1 is minute. successfully been negotiated. In about 10 seconds from now, we will see the first set of 4 ground-lit strap-ons separated. जी हाँ, जो ठोस कोर चरण होता है वो जमीन पर ही प्रक्षेपण के 3 सेकंड पूर्व प्रज्वलित Ground हो lit जाता है। strap-on separated. जी हाँ, बिल्कुल विलगाव हो चुका है जो स्ट्रैप-ऑन्स हैं उनका, और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि यान अपने गंतव्य तक बिल्कुल फॉलो करता हुआ उसके अनुमानित पथ को अवलोकित पथ द्वारा Plus 1 minute 30 seconds. 1 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। Air lit strap-on The separated. remaining 2 strap-ons also are separated. Now the first stage is functioning on its own, alone, and we have steadily gaining altitude. Now the relative velocity is 2 kilometers per second, and in about 5 to 10 seconds, the first stage will complete its task, burn First out stage and separate. separated. Second stage जी हाँ, engine आप started. स्क्रीन पर पोंगिनान जी को देख पा रहे होंगे। ये Plus हम 2 minutes. घोषणा करते हैं कि कौन सा स्टेज जो है वो सफलतापूर्वक अलग हो चुका है। इस समय
हम द्वितीय चरण के इग्निशन के बाद की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। द्वितीय चरण performance normal. प्रज्वलन के दौरान लगभग 158.3 सेकंड के बाद ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपनी जो ऊष्मीय सुरक्षा कवच है या जिसे पेलोड फेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है वो अलग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी होती है वो। अभी तक जो निष्पादन है वो बिल्कुल सामान्य है। यान अपने गंतव्य तक जाता हुआ इस समय करीब करीब 2 मिनट 35 सेकंड की यात्रा पूरी कर चुका PSLV-C37। Heat shields separated. जी हाँ, ऊष्मीय सुरक्षा कवच अलग हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जब ये सुरक्षा कवच अलग होता है। ये करीब करीब 134 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद होता है जो इस यान को ऊपर ले जाएगा। The second stage is under Second stage operation. performance This normal. is a liquid stage built by ISRO and uses primarily unsymmetric dimethyl hydrazine as fuel. It's a very efficient stage with a specific impulse of as high as 295 seconds, and it will be burning for a total duration of 150 seconds. It will be some time before we separate this stage, and the performance till now has been perfectly normal. On your screen, all the mission experts of ISRO having a close watch on the launch. Everything as per plan, and you can see, or you'll be shown shortly, the flight is following the pre-flight. Now it's on the screen. The pre-flight predictions are in red color, and the green color is the instantaneous position of the vehicle. And you can see the position is one over another. जी हाँ, करीब करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच चुके हैं और जो परास है वो 370 किलोमीटर का हो चुका है। इस समय हम 250 सेकंड का जो समय है व्यतीत कर चुके हैं। बहुत ही नजदीक जब तीसरा चरण प्रज्वलन शुरू होगा। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताते चलें कि 4 चरणों वाले PSLV में उल्टी गिनती के ही दौरान यान के दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाना था। बिल्कुल करीबी घोषणा कि PSL जो तृतीय चरण था वो इग्नाइट हो चुका है, प्रज्वलित हो चुका है, और दूसरा चरण जो है वो सामान्य निष्पादन करते हुए अलग। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाता है। इसी दौरान प्रथम चरण के जो RCT होते हैं उनमें भी ईंधन के रूप में MMH मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिश्रण अर्थात MON3 भरा जाता है। इस समय करीब करीब 5 मिनट का समय बीत चुका है। तृतीय चरण अपने निष्पादन को समर्पित करते हुए लगातार गंतव्य तक आगे बढ़ता आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ रेंज और एल्टीट्यूड मतलब परास और ऊंचाई की तुलना, अनुमानित पथ जो है उसी को फॉलो करता होगा अवलोकित पथ, और दूसरी तरफ आप दाएं तरफ देख पा रहे हैं ग्राउंड ट्रेस, माने किस तरह से श्रीहरिकोटा से आगे बढ़ता हुआ जो लॉन्जिट्यूड है उस तरफ बढ़ता हुआ हमारा यान। How you are seeing this information is now, I'll tell you next. We use a network of ground stations for tracking telemetry and telecommand activities related to this mission. The health and trajectory parameters of PSLV-C37 is available to these ground stations via the antenna mounted on the rocket along with the required subsystems. This information is sent to Sriharikota ground station in real time, and we shall be showing you this information, or rather we are showing you this information on the real-time display screens. The entire ascent mission of C-34 till orbit is tracked by ground stations at Sriharikota, Thiruvananthapuram and Mauritius. CARTOSAT 2, INSAT 1A, INSAT 1B, INS-1A, INS-1B, and a few nanosatellites separation will be visible from Mauritius. However, the most of the nanosatellite separations will occur after we have the Mauritius ground station loses the vehicle, that is the vehicle is out of the sight from Mauritius ground station, and hence we will be recording the separation data on board, and when around 500 seconds later Troll ground station in Antarctica will acquire the vehicle, then all the things will be again shown to you. So we will confirm to you the separations of 72 of the 101 nanos during this period,
And again, last 20 separations will Coasting be normal. visible from trawl, which will be shown to you in real time. जी हाँ, कोस्टिंग बहुत छोटी, जैसे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर पुंगनान जी बता रहे थे। तृतीय चरण प्रमोशन के 264 सेकंड के बाद है, ये यूं कहें कि दूसरे चरण के पृथक्करण से 1.2 सेकंड के पश्चात तीसरा चरण प्रज्वलित हो गया, तो जो 227.6 सेकंड का ज्वलन यान को देकर यान को एक अभीष्ट ऊंचाई दे देता है। अब हम बहुत ही करीब तृतीय चरण के प्रज्वलन के बंद होने की प्रतीक्षा में और चतुर्थ चरण के जो प्रज्वलन के लिए, तृतीय चरण के प्रज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व निशक्ति समय लगभग 116.6 सेकंड का है इस अभियान में। और आप देख पा रहे हैं कि ये कोस्टिंग पीरियड से गुजरता हुआ यान इस समय बहुत ही नजदीक उस घड़ी के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित होगा। तृतीय चरण बंद हो चुका है इंजन और कोस्टिंग पीरियड निशक्ति काल चल रहा है। करीब करीब 8 मिनट 10 सेकंड का समय बीत चुका है। हम बहुत ही करीब उस क्षण के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित किया जाएगा। उड़ान अनुक्रम का निर्धारण जी हाँ, जो तृतीय चरण है वो अलग हो चुका है अपना निष्पादन देते हुए सामान्य रूप से, और अब चतुर्थ चरण भी प्रज्वलन शुरू कर चुका है। तो अभी तक सारे चरणों ने अपना अभीष्ट निष्पादन यान को दिया। The nominal performance till now of the vehicle is very heartening for us, and now as you can see the fourth stage is performing. It's the twin engines of the fourth stage are firing at their peak level at normal steady level. 9 minutes. And just now you have heard that the performance of the fourth stage is nominal. On the screen, senior directors of ISRO intently observing the launch, and as we coast. अभय जी, मैं सॉरी चाहूँगा आपसे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये हमारे केंद्रों के निदेशक महोदय हैं। कितना कॉन्फिडेंस, कितनी निश्चिंतता है इस यान के बारे में, GSLV के और PSLV के प्रोग्राम डायरेक्टर्स। जी हाँ, yes, Dr. Alok, you are right. After 37 successful flights, the experience really shows, but at the same time you will see that the commitment visible is as if it is the first launch. Every launch for us becomes so important, and our senior directors and senior scientists show the same level of commitment as if it's an early stage of a rocket development launch. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभय कुमार जी आपने। होता दरअसल ये है कि कोई भी इस तरह के स्पेस मिशंस जो होते हैं, कितना भी कुशल वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन अनिश्चितता कहीं भी बरकरार रह जाती है। तो निश्चित रूप से घड़ी किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक निश्चितता जो आ जाती है इतने लंबे अभियानों के बाद, वो चेहरे पे झलकती है। हमारे जो विदेश के उपभोक्ता हैं वो आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे, कुछ अमेरिका के, कुछ स्विट्जरलैंड के और नीदरलैंड के, इस तरीके से विभिन्न उपभोक्ता जो हैं हमारे साथ। NRSC के निदेशक महोदय और शार सेंटर के पूर्व निदेशक, और ये पोंगिनान जी हैं जो रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर उड़ान अनुक्रम का जो निर्धारण होता है प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके। उड़ान के इस निशक्ति समय के दौरान जब तृतीय या चतुर्थ हुआ था, तब रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है, ताकि निशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण जब अलग होता है, तब उस समय किसी भी तरह की आशंका से मुक्ति पाई जा सके। तो इस समय हम जो अपना शार सेंटर है उसकी विजिबिलिटी के बिल्कुल सीमा के अंदर हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे परास क्षेत्र से निकल के जब हमारा यान चतुर्थ चरण से संपन्न हो जाएगा, तब हम त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम जब त्रिवेंद्रम से बाहर निकलेंगे तब मॉरिशस तक आएंगे, लेकिन तब तक भी सारे उपग्रहों का जो पृथक्करण वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने उनके पृथक्करणों को रिकॉर्ड कर लेंगे यान में, और जब हमारा ट्रॉल जो ग्राउंड स्टेशन है वो दिखाई पड़ेगा, उसकी सीमा के अंतर आएंगे, तब हम आपको एक साथ करीब करीब 76 से 80 उपग्रहों के पृथक्करण को दर्शाएंगे। Performance till now on dot
totally nominal performance by PSLV-C37. And one interesting thing I would like to share with all of you is, today we are having 111 separation events, and in this 111 separation events, we will separate 115 bodies from the PSLV. Fourth stage The performance strap-ons are separated in sensible atmosphere. They have already been separated using a set of springs. The heat shield halves have been separated using a linear bellows system, pressure-based system. The movement band bolt cutter mechanism was used to separate the second stage. The third stage was separated using ball release type mechanism and jettisoned using springs. Now all the spacecrafts will be separated using springs. By a very careful and elaborate analysis, a safe separation meeting all mission requirements is ensured. Our chairman, Shri A.S. Kiran Kumar, watching Plus the 13 minutes. launch with intent, every parameter is in his eyes and in his mind. जी हाँ, करीब करीब 13 मिनट का समय बीत चुका है। हम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से गुजर रहे हैं। कार्टोसैट 2D को 505 ±5 किलोमीटर की वृत्तीय सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 98.1 किलोमीटर झुकी होगी। श्री तपन मिश्रा जी, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक भी हैं, जो उपग्रह में प्रदाय भार लगा होता है, जो 2 कैमरे लगे हैं, पैनक्रोमेटिक कैमरा और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, इस तरह के प्रदाय भारों की अभिकल्पना, निर्माण, ये सभी कुछ सैक में होता है और उसके बाद उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में, जहां उपग्रह का निर्माण किया जाता है। तो उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित ट्रैक भू केंद्र उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा। उपग्रह की अभिकल्पित कालावधि लगभग 5 वर्ष की होगी। इस समय हम करीब 3634 किलोमीटर दूर हैं श्रीहरिकोटा से और ऊंचाई करीब 518 किलोमीटर की पहुंच चुकी है। Another 170 seconds to go before we reach the orbit. And an interesting fact about this mission is that once all the 104 satellites are injected, they are in a very similar yet slightly different orbit due to the small separation velocities given. Also, during the passivation process of the last stage, RCS thrusters are fired to maintain the attitude, and they also give a small additional velocity to PS4. Taking care of individual satellite velocities and PS4 velocity changes, as I've told you, the orbits of these bodies are propagated for a few days, and positive gap between them is ensured by suitably adjusting both the sequence of separation as well as the orientation change required in the fourth stage. Hence, this process brings out the sequence of operations to perform for the separation of the multiple satellite separation in the mission. जी हाँ, इस समय आप अपने स्क्रीन पर फ्लाइट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। एक्चुअली जिस तरीके से भारत के सुदूर दक्षिण से जब श्रीहरिकोटा से उपग्रह को हम आगे बढ़ाते हैं यान के साथ में, तब धीरे धीरे किस तरीके से परिवर्तन होता है लॉन्जिट्यूड में, वो आप देख पा रहे होंगे। बड़े खुशी के जो क्षण है वो इसरो के चेयरमैन के चेहरे पे आप बाकायदा देख पा रहे होंगे। वैसे एक बात और जो प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी हुई होती है, वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण, इम्पैक्ट एनालिसिस। इस विश्लेषण का आधार है संकट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य। श्री A.S. किरण कुमार जी, जो बहुत ही निकटता से हर उन आंकड़ों को देखते हुए और उनके साथ दोनों तरफ विभिन्न केंद्रों के निदेशक मौजूद हैं, इस समय हम बहुत ही नजदीक से उन अवलोकनों का, उन घड़ियों की प्रतीक्षा करते हुए जो इस यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर की उद्घोषणा कुछ ही क्षणों में। PS4 engine has been shut off. Engine shut off. Injection conditions normal. So the orbit has been achieved. We are at 509 kilometer altitude, orbit of
505 plus 17 by minutes. 505 is achieved. Inclination has been achieved, 97.47. And in about 20 seconds from now, we will be injecting the CARTOSAT 2 satellite series into the orbit. जी हाँ, अब हम चतुर्थ चरण के इंजन के बंद होने के बाद उस घड़ी की प्रतीक्षा, जब कार्टोसैट 2D जो यान से अलग होगा, पृथक्करण होगा, उसके बाद ISRO 1A और 1B अलग होंगे, और उसके बाद जो शेष नैनो उपग्रह हैं एक के बाद, ये बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्टोसैट अलग हो गया है 10:45 सेकंड के पश्चात। उसके बाद ISS 1A और 1B भी अलग है। तो मैं तो अपनी स्क्रीन पर बाकायदा देख पा रहा हूँ क्योंकि उसमें कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल सफलतापूर्वक दिखाते हुए। काश मैं अपनी आंखों से आपको ये समाचार दिखा पाता, ये घड़ियां दिखा पाता। The main satellite CARTOSAT 2 and the 2 nano satellites of ISRO are ejected. Plus 18 We have minutes. seen on the monitor through video cameras the ejection, and now in a short while the sequence of 101 satellites separating from PS4 will be initiated. लेकिन अभय कुमार जी, एक चीज और होगी कि बहुत ही जल्दी हम अपने जो यान है या अपना जो त्रिवेंद्रम है उससे और मॉरिशस से हम अपना जो देखने का वो नजरिया वो बदल लेंगे, क्योंकि इस समय हम अलग हो जाएंगे, यान से दूर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, that's true. And now you can see the nano satellite separations have started. The 4 quad packs of the nano satellites, 4 pairs of nano satellites are separated. Now what is happening is that the vehicle telemetry and the contact with Mauritius ground station, that is lost. Mauritius ground station has, there has been a loss of signal because plus 19 minutes will be the confirmed track of the after vehicle has data crossed the reception Mauritius from range, and Trawl about station for 6 minutes expected we will be after T plus 26 minutes, that is 7 minutes from now. Please stand by. So as range operation director has informed you already, about 6 minutes there will be no signal from the vehicle. What is happening is that we are now undergoing all this nano satellite separation in pairs. Totally 40 pairs, 80 number of satellites are getting separated. 8 of them you have already seen, in fact, on your screens. The remaining 72 satellite separation data is getting recorded on board the vehicle systems, and when around 500 seconds later, from now, plus 20 minutes. when the Trawl station in Antarctica will acquire our PS4, that is the PSLV vehicle, then this 72 satellites data, separation data, will be transmitted to Sriharikota, and we will show you that information. Subsequently, another 20 satellites will be separated during the visibility of Trawl, and thus ending the ejection of all 101 nano satellites from our esteemed customers. जी हाँ, जैसा कि रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने और बाद में हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया आपको कि जो 101 उपग्रह हैं उसमें से कुछ उपग्रहों को, 4 पेयर जो थे उनकी नैनो उपग्रहों को, उसको हमने प्रक्षेपित कर दिया है और वो दिखा रहा है, और बाकी उपग्रह भी यान से लगातार प्रक्षेपित होते जा रहे हैं, लेकिन यान से मिलने वाला संकेत हमारे किसी भी भूकेंद्र पे रिसीव नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है। इसे हम लॉस ऑफ सिग्नल कहते हैं। लेकिन यान सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और इन सारी गतिविधियों को हम यान में ही लगे हुए रिकॉर्डर द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ही हमारा यान ट्रॉल भूकेंद्र की सीमा में आएगा, वो सारा डाउनलोड किया हुआ डेटा हम आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस समय हम आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर अपने दर्शक दीर्घा को देख पा रहे हैं, ये हमारे विदेशी उपभोक्ता हैं जो अलग अलग देशों से हैं। जैसे प्यास उपग्रह जो द नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं, उनका है
और स्विट्जरलैंड के डायडोर 2 जिनका 4.2 किलोग्राम भारी उपग्रह है, जो बेसिकली जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होती है उसमें काम आएगा। इसरो के विभिन्न वैज्ञानिक जो आप देख रहे हैं, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के निदेशक श्री राकेश कुमार जी और राकेश कुमार जी को, और उसी तरीके से आप जो विशिष्ट जो हमारी दर्शक दीर्घा है उसमें श्री सुरेश कुमार जी को देख पा रहे होंगे। इस समय जो रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर हैं वो हमें अपडेट करेंगे जैसे ही हमें सिग्नल प्राप्त होगा ट्रॉल में अंटार्कटिका के पास। इजराइल का बीजीयूसैट और अल फराबी जो है वो 1.7 किलोग्राम भारी कजाकिस्तान का। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि कार्टोसैट 2D जो जानना है अगर आपको इसके बारे में, तो आपको अतीत की परतों में छुप गए बीते समय के उन 4 उपग्रहों को भी जानना होगा जिनके अभिकल्पना की परिणति है ये नया उपग्रह। 5 मई 2005 का वो दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब PSLV-C से हैमसेट के साथ इसे छोड़ा गया था। तब इसका भार 1560 किलोग्राम था। ये जो हमारे कुछ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, ये कुछ उनके परिवार के लोग भी बड़ी उत्सुकता से इस घड़ी के साक्षी बनते हुए। उसके बाद बारी आई कार्टोसैट 2A की, जो 28 अप्रैल 2008 को PSLV-C9 से 635 किलोमीटर की कक्षा में उसे छोड़ा गया था। और उसके बाद कार्टोसैट 2B को 12 जुलाई 2010 को PSLV-C15 से छोड़ा गया था। उसके बाद कार्टोसैट 2C को इसी विगत वर्ष 22 जून 2016 को PSLV-C34 से 505 किलोमीटर की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया था। दरअसल इन सारे उपग्रहों को अगर मैं एक नाम दूं कि ये समूचा यान जो है वो विभिन्न तरह के सुदूर संवेदी उपग्रह अपने साथ लेके गया है 104, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसमें से 3 हमारे स्वदेशी हैं, 101 विदेशी उपग्रह हैं। अच्छा, इनका उपयोग अगर हम बात करें आपसे, तो इसे समूचे विश्व की कार्टोग्राफिक जरूरतों जैसे त्रिविमीय प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले मानचित्रीय अनुप्रयोगों हेतु इस उपग्रह का उपयोग किया जाता था। इसमें लगे कैमरे का विभेदन 2.5 मीटर था, जिससे हम अंतरिक्ष की ऊंचाई से जमीन पर दौड़ रही छोटी किसी कार को भी पहचान सकते थे। ये तब की बात है जब PSLV-6 से हमने कार्टोसैट 1 का प्रक्षेपण किया था। लेकिन अगर हम आज कार्टोसैट 2D की बात करें तो हमें जो विभेदन प्राप्त हुआ है वो करीब 0.64 किलोमीटर का है, जो पैनक्रोमेटिक कैमरा का है, और करीब 2 किलोमीटर जो है वो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का है। लेकिन इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि कार्टोसैट उपग्रह में कंपोजिट स्ट्रक्चर जो था वो पूर्णतः स्वदेशी था, जो पहले से हमने जर्मनी से बनवाया था, लेकिन आयातित किया था। लेकिन उसके बाद कार्टोसैट 2D में हमने जो कंपोजिट स्ट्रक्चर तैयार किया है वो स्वदेशी है, और इसमें जो प्रदाय भार के रूप में लगे हैं वो पैनक्रोमेटिक कैमरा है, मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा है, जो TDI या टाइम डिले इंटीग्रेशन मोड में कार्यान्वित होगा, तथा 2 इवेंट मॉनिटरिंग कैमरे लगे हुए हैं ताकि पूर्व नियोजित स्थल का वीडियो प्रतिबिंबन भी प्राप्त किया जा सके। अच्छा, आपकी राह पे चलते हुए ये जो कार्टोसैट 2D उपग्रह है वो 0.26 डिग्री आगे पीछे या दाएं बाएं भी देख सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उपग्रह है जो सुदूर संवेदी के काम आएगा, जिसमें हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए, जिसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS या LIS जो सूचना प्रणाली है, भूमि एवं सूचना प्रणाली, इसे हम इसके रूप में यूज कर पाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समाज में विभिन्न दायरों को, निश्चित रूप से विभिन्न तबकों को स्पर्श करेगा। Another about 2 to 2.5 minutes before the troll station acquires our PSLV, and a little details on the nano satellites which are undergoing separation right now. The Flock 3P, totaling 82 Dove satellites, is a fleet of remote sensing satellites that will image the entire Earth every day for commercial, environmental, and humanitarian purposes. The Dove satellites are designed, built and operated by Planet Incorporated headquarters in San Francisco. These satellites are being launched as a part of Planet's Flock constellation. These 88 satellites will be housed inside 22 quad-pack dispensers
Each Dove satellite weighs around 4.7 kilograms, and the total mass of 88 satellite along with the quad pack dispensers is 569 kg. You can, we are able to see on screen from our monitors a nominal Plus track 27 minutes. of the vehicle closely approaching towards Antarctica, where it will be acquired by trawl. Next, we have 8 numbers of Lemur satellites assembled in 2 quad packs. Each Lemur is 4.6 kilograms, belonging to Sapphire Globe Incorporated, San Francisco, USA. The mission objective of Lemur satellite is to provide vessel tracking using automatic identification system. In addition, it will carry weather measurements using GPS radio occultation. The total mass of 8 Lemur satellites with quad pack is 52 kilograms. We have 5 more satellites in a single quad pack. PEASS or PACE satellite weighs around 3 kilograms and is built by European consortium of partners owned by Innovative Solutions in Space, BV, the Netherlands. It's a technology demonstrator nanosatellite. The Dido-2 is a 4.2 kilogram nanosatellite built by company Space Pharma from Switzerland. Its objective is microgravity research. Plus 28 minutes. The BGU-SAT is a 4.3 kilogram nanosatellite built by Israeli Aerospace Industries in cooperation with Ben Gurion University, Israel. The Al-Farabi-1 weighs 1.7 kilogram and is built by Al-Farabi Kazakh National University in Kazakhstan and is a technology demonstrator nanosatellite. Finally, the Naif-1 is a 1.1 kilogram technology demonstrator built by Emirati students from the American University of Sharjah in partnership with Mohammed bin Rashid Space Center, Dubai. Both Al-Farabi-1 and Naif-1 are occupying a single 3U slot in the quad pack. We are very close to the injection now, and we will see from at any moment now, the trawl will be acquiring PS4 and giving us the information on the nanosatellite separations. जी हाँ, दर्शक दीर्घा जो आपके स्क्रीन पर एक युग था जब हम विदेशों में जाया करते थे अपने प्रक्षेपण के लिए, तब हम इसरो के वैज्ञानिक उपभोक्ता की कुर्सियों पर बैठा करते थे और आज वो दिन है जब हमारे यान विदेश के कई उपभोक्ताओं को अपने यहाँ स्थान देते हैं. ये फ्लाइट पैरामीटर्स PSLV-C37 के जो आप देख पा रहे होंगे, 10,000 किलोमीटर की जो रेंज है उसे हम प्राप्त कर चुके हैं और हम किसी भी क्षण ट्रॉल जो हमारा भूकेंद्र है उसकी परास में आ जाएंगे और उसके आने के बाद हमें उन सभी पृथक्करणों को जो नैनो उपग्रह पृथक हुए हैं उनकी एक साथ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और हमारे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर लगातार संपर्क बनाए हुए भूकेंद्र से बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हुए कि किस समय यान जो है वो उसकी परास में आए और निश्चित रूप से उस समय हम आपको पृथक्करण की जानकारी देंगे. वैसे निश्चितता सबके सभी के चेहरों पर बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है. इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित हो और संघट मुक्त भी हो, इम्पैक्ट फ्री हो. ये पृथक्करण घटना यान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए उनकी अभिकल्पना पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है. PSLV-C37 में यान से जुड़ी हुई इस तरह की 6 पृथक्करण घटनाएं हैं, लेकिन उसके बाद जब अनेक उपग्रह आते हैं तो करीब करीब बाबा जी 101 ऐसी प्रणालियां और 101 प्रणालियां और भी हैं. हमारे साथी वैज्ञानिक अभय कुमार जी लगातार इस तरह की अभिकल्पनाओं से VSSC में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमसे ज्यादा जानकारी बता पाते हैं. मैं इस समय आपको केवल ये बता दूं कि हम बड़ी बेसब्री से इस घड़ी का प्रतीक्षा कर रहे हैं जब यान अलग होगा. सभी के चेहरों पर बेहद खुशी इस समय, तो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि शायद हमें संकेत प्राप्त हो चुका है. जी हाँ, आप स्क्रीन पे सभी 104 उपग्रहों के सफलतापूर्वक पृथक्करण की घटना को देख पा रहे हैं. बेहद खुशी का मौका विश्व कीर्तिमान भारत के नाम. Yes, all the 104 satellites injected, and it is a world record in terms of communicating satellites launched in a single launch by any country. Separation of all 104 satellites confirmed. Now the mission has been accomplished successfully, and shortly you will hear our chairman Shri A.S. Kiran Kumar addressing the gathering here. You can see the congratulations going around
among the senior scientists, and the mood is obviously jovial and good we are in morning a to mood all of you. celebrate because And another today landmark has been achieved by us. PSLV-C37 has put in the CARTOSAT 2 series satellite, and all the remaining 103 satellites have been successfully put into the orbit by this launch vehicle. My hearty congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done. Jai Kumar. Now I'll request our project director, Jai Kumar, to say a few words. Good morning. Indeed, it's a very great moment for each and every one of us. And as you know, doing something new in an innovative way successfully is always a passion for ISRO team that we call the affectionately Team ISRO. In fact, today we had the successful launch of PSLV-C37 CARTO 2 series mission. That is the 39th. That is another example for this, whatever statement I made. And it is confirmed now all the 104 satellites which it has carried has been successfully deployed in orbit. And with this, another record PSLV has created. It has launched so far 226 satellites, out of which 179 are from foreign nations. In fact, as you know, when you carry 104 satellites, it's a very complex mission. It's a lot of associated issues are there. Of course, our teams had come out with very good solutions at the right moment. The first one was finding a real estate for accommodating all the satellites within the payload compartment. In fact, okay, that we have realized a few new adapters which was added to the conventional adapters. With that, we managed. Then to the mission management. As you know, this is a very highly mission-intensive launch. And a unique separation sequence has been designed by our team and which has functioned well today, and a lot of complex maneuvering of the PS4 upper stage to which the satellites has been attached has been also implemented. So it has come out very nicely, and we recorded all the separation events of stages, propulsion stages, as well as the satellites. So that also has worked very well. And then the integration part, that was also excellently handled very efficiently handled by our team, because the wiring, the command, going the right command to the satellite is very essential for this, because any small error can create havoc. And in fact, it's a very enjoyable mission. It's excellent teamwork, result of excellent teamwork. And let me compliment Team ISRO for the excellent work that they have done. And let me use this opportunity to also acknowledge the contributions and the advice given by our senior members and consultants to overcome these issues. And let me also acknowledge the excellent contributions by our industry counterparts, without which we could not accomplish this mission also. Let me wish good luck to the satellite team for the early successful commissioning of all their satellites. Thank you very much. Just now, Prime Minister has conveyed his congratulations to the entire ISRO team for the wonderful job they have done, and he has said, keep it up. Taking on from the momentum we gained in the momentous 2016 with 9 successful launches from here, this year's first launch has turned out to be a remarkable event that will be inscribed in golden letters in the space history of India. 104 satellites, as Project Director has mentioned, 104 satellites have been very precisely injected into the orbit as per the intended sequence by PSLV-C37, clearly reiterating the ISRO's capability in handling complex missions in a more professional way. The countdown time of 28 hours for this mission was the shortest among all the PSLV missions we had so far. I salute the entire team who has kept our flag flying high and taking India to a commendable position. We are getting geared up for our upcoming missions
3 missions to be launched in the first half of 2017, and the activities are in progress at various centers of ISRO. And at Sriharikota, the launch campaign of 3 different types of vehicles, namely PSLV, GSLV, and GSLV Mark III, have been progressing in a professional way, activating the entire launch complex facilities, including the 2 solid propellant plants that delivered all the solid motors required for this mission. I must congratulate the whole ISRO fraternity, the launch vehicle teams from various centers, the spacecraft team, the payload teams who have delivered complex payloads for our spacecrafts, the antrics team, the external industries, and all of you who have put in untiring efforts towards the successful accomplishment of this wonderful mission. I must also congratulate our esteemed customers from various nations for the confidence bestowed on ISRO, and specifically on PSLV, with 38 consecutive successful missions in a row in its credit after this launch. I am proud, and I feel happy that the Spaceport of India could provide world-class service to our customers, making India, ISRO, an ideal location for the launch services. I am sure with the addition of CARTOSAT 2 series in the orbit today will definitely augment and enhance the capability of remote sensing for our country. Let me also wish excellent performance from all the customer satellites deployed in the orbit by PSLV-C37 today. Thank you. It is a national pride that the country has launched 104 satellites in one go using our beloved PSLV. Even though we have launched this satellite very easy, in fact, it's a very, very toughest mission what we handled. Even if it is assuming that one satellite separation process is a complex task in space, just imagine 104 satellites makes 5,460 combinations of couplets, ensure that they are not colliding each other. We have made an excellent analysis and mission studies so that mission strategies was designed perfectly to ensure the satellites are separated precisely and safely. And let me compliment the design team across the ISRO centers of launch vehicle centers as well as satellite centers for achieving this grand mission. When you are talking about 104 satellites, that along with that we have some innovative experiments in this mission. That's number one. Our Desi navigation, NAVIC, really used for predicting the orbit of the satellites, 104 satellites. That is the one point. Second one, the PS4, after the separation of all the satellites, now it's keeping alive for 10 more orbits. This will make a provision, testbed for making a extensive analysis purpose later stage. And this great endeavor we got with the support of our ISRO team members, along with the MRR members, then FRR members, and industry. And not only this one is the end of this mission, now we are having series of missions like GSLV and GSLV Mark III and the PAD-ABORT test for human in space program and so on. So let me wish the entire ISRO team for the wonderful work done. And also we are expecting that this team is going to make more and more histories in near future. Thank you very much. Congratulations once again to Team ISRO for this remarkable achievement. As already stated, this is history now to be written in golden letters for the space story of India. The performance of PSLV has been excellent. As you already know that all the satellites have been successfully deployed. But going through the mission, I can confirm to you that the whole stages have performed exceptionally well. I want to congratulate once again for making PSLV the most reliable launch vehicle of today.
especially the people who are behind making these stages at different work centers of ISRO, spread across the entire country, the industry, support, the people behind the review and the guidance which is given to the team, the quality people, and all the joining them together to make a very successful, remarkable mission today. For the community who is behind this, making this PSLV, the propulsion team, this time has been an excellent, very remarkable, successful times. We have realized our C-25 engine and the stage has gone through a very successful test for 50-second duration, making way for the GSLV Mark III mission in the immediate future. We are also developing and testing the Chandrayaan-2 lander propulsion, which is getting ready for the integrated test on this month end or so. And we are also getting ready for the C-25 stages for its penultimate qualification test for full duration test of 640 seconds in very short time, in very few days from now. So we have very challenging times ahead, and we are also getting ready for missions of PSLV, GSLV, and GSLV Mark in just coming 1 or 2 months' time, as already been stated by other center directors. So we are looking for a very successful and eventful year ahead, starting with this big bang of PSLV-C37 CARTOSAT 2 series mission. I wish all the best for the customer satellites who have been successfully deployed from PSLV mission, and also the satellites of India, which is making us stronger in remote sensing from the times to come. Thank you so much. Good morning, Chairman ISRO, my all fellow colleagues here. 100, Shadam, is a magnetic figure now also for everybody. India is 104 not out. If you see, it's a quantum jump from wherever we achieved in C-34-20 straight away to 104. And the missions are not complete now also for PSLV. Much more exciting missions are waiting. And it's a teamwork, a lot of contributions from industries across India. And of course, the center in which I represent actually, ISRO Propulsion Complex Mahendragiri, has put in a lot of efforts for this particular mission. And these nano satellites, INS-1A and 1B, 5 kg payloads, are going to simulate much more good simulating environment for the universities and academia here. And numbers are going to come in the coming years, and more exciting environment for industries also. And couple of days now from today, day after tomorrow, we are testing this first indigenously built cryo stage for Mark III, C-25, 640 second duration full test we are conducting. After that, the Mark III and Mark II stages are getting ready, and high thrust Vikas engine series test is in the offing. Much more exciting moments are there to be provided by ISRO for this great nation. Thank you very much, and all the best for the customer satellite for healthy orbiting. Thank you. Respected Chairman, ISRO, my senior colleagues, and all my dear colleagues, it's a great day today by placing 104 satellites in space in one go. We have really set a new record. All the scientists from ISRO, the industry partners, academia, all those teams who had contributed for this mission are to be complimented greatly for this wonderful epoch mission. Once again, our navigation systems on board, along with the control and guidance and all the propulsion systems working fantastically, we could place the CARTOSAT 2D in a very good orbit. Our nanosatellites, INS-1A, 1B, are going to give a very good platform for experimental studies by R&D labs. For controlling these satellites, micro wheels were developed in a very record time by IISU. All these teams are to be congratulated and complimented for this wonderful feat.
एक ही मिशन के दौरान 104 उपग्रह अंतराल में छोड़कर भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे देश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और ये दिन हमारे अंतरिक्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस सुयश के लिए मैं अपने इसरो टीम को तथा सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Chairman ISRO, the whole of ISRO community, the fellow Indians, every time when you are coming to the PSLV launch campaign or the launch campaign in Sriharikota, every time it's really inspiring. And every time it motivates a bit more than what it was done previous occasions. No exception this time also. 104 is a century of that category. I think we are no less than any of Indian cricketers. We are also making centuries. And yes, my team, satellite team also, is now the CARTO 2 series next mission, second mission is already its orbit doing its well. Panels deployed. Initial acquisition auto sequencer is over, and we are getting ready for the payload operation 18th of this month. In between, we will do an orbit maneuver to make sure that we are going another 5 kilometers away from the exiting the cluster of satellites. While doing another century also we are planning, probably it's coming another couple of months from now. S1 today, this is the 97th satellite with 3 satellites going, CARTO 2S second satellite, and 2 of the nano satellites going. We have made 97 satellites rolled out from ISRO Satellite Center. So 3 more are offing in the name of GSAT 17 is fully completed satellite is ready to go for the launch phase. GSAT 19 has completed thermovac. Yesterday it came out of the thermovac. Today GSAT 9 is entering the thermovac, going for all the 3 launch vehicles of Ariane, Mark 2 of GSLV, Mark 3 of GSLV. 3 satellites are getting ready. And some more also going. In the process this year, I think we will be able to complete Chandrayaan 2 also ready for the launch for the early next year. That way, satellite team also fully getting ready. While doing every time, I think we are ensuring that build delta improvement we are doing. INS is the one major thing we are doing. The satellite may be very small, 5 kg of the satellite only, but the young team has done a fantastic job in the last just few months. They managed this satellite to come out, and carrying 4 different payloads across the 2 satellites is a really a remarkable thing that's done by a young team, which giving a impetus for the possibly academia as well as other Indian laboratories to come out with the innovative payloads which probably we can do what we can do further point of view, as well as our own ISRO laboratories. Already we talked about both the Director SAC and the Director ISU, LEOS, and even LPSC Director talking about how we can miniature system to have a better things, so that technology demonstrators of all the future missions of the miniature systems is possible to do. I think that is also, it's a fairly good step we have done that. Though the satellite is a nano, I think it's expectations are very big from this point of view. CARTO 2 series also, previous satellite we launched in June 23rd. Typically satellite of this nature, which is carried a fairly good number of technologies carried previous mission. So that mission of that caliber typically calls for 6 months of validation on board, on orbit. After that, if you're planning for the launch to repeat the satellite, typically any standard it will take 1 year. But you look back, June 23rd, previous satellite launched and demonstrated on-orbit demonstration to the all the customers. It has done well. And accordingly, November 14th, to be precise, a chairman asked me, is it possible for you to get this satellite ready before January 26th of this year? I told with the hesitations that February it's possible. You try for January, he told. But we made all our effort. Today, February 15th, we made the satellite ready. Just 3 months after his storytelling. This is a remarkable record, whatever the team has done. The team, I think only Team ISRO can do such accomplishment. Always, we are not competing with anybody, we are competing with ourselves. Our previous launches went for competition for the subsequent. So, CARTO 2E has to come April. I think that is the target we are aiming for. I think that also it is there. And GSAT 9 also has to match for, slightly we are seeing some 15 days offset for the overall Mark 2 point of view. That also back, I think my GSAT 9 team and the team will watching, probably they will to catch up there. With that,
always our aim is to improve upon what we have done already. I think this is the mantra the chairman has told, and that I am conveying back to you. Thank you very much. किरण कुमार साहब, चेयरमैन इसरो, और इसरो की बाकी सब केंद्र की निर्देशकों ने और मेरे दोस्तों इसरो, आखिर पे इसरो महाकाश विज्ञान पे पहला शतक मारी, और वो भी विराट कोहली जैसे। और दूसरा चीज़ ये पहली बार हमारा PSLV खुद का सेल्फी ली और वो सबको बताए, और ये भी पहला चीज़ हुई है। और अंतरिक्ष और सैक के निर्देशक होने के नाते तो मेरे नाज है जो हम आज 4 पेलोड दिए। एक कार्टोसैट 2D INS पे 3 पेलोड है, 2 सैटेलाइट पे 3 पेलोड है। और मेरे याद है जो नवंबर 20 में चेयरमैन सर ने फ़ोन करके बोले जे दिसंबर 20 तक कार्टोसैट 2D देने का 3 महीना कट। और मैं पहले वो थोड़ा आर्गूमेंट करने गया, बट बाद में सोचा उनसे आर्गूमेंट करना फिजूल है, मान लेना ही बेहतर है। तो कार्ड भी तैयार नहीं था सब, और ये सब करके मैं इस सैक के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की मेरे सहकर्मियों को मैं बधाई देता हूँ। चेयरमैन साहब ने जो भरोसा किए थे हम उसमें खरे उतरे, ये सबसे बड़ी नाज है। और दूसरा चीज़ जो मेरे को इतना दिन पता था जो IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट चेयरमैन साहब का हाथ में IST का मतलब इसरो स्टैंडर्ड टाइम, IST से 3 से 6 महीना काट देने का और उसमें मैच करने का। अभी मेरे को इसरो स्टैंडर्ड टाइम पता है। और इस पे एक जो पेलोड में कार्टोसैट 2D पे हम नए तकनीक लगता है 2C जैसी, बट इसमें जो मिरर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये पहली बार 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर गई है, और ये बराबर परफॉर्म करेगी, ये मेरे भरोसा है। और नैनोसैट पे जो हमारा जो 3 पेलोड है उसमें एक जो पेलोड वो मेज़र करेगी दिन का सूर्य का किरण का डायरेक्शन के साथ ब्राइटनेस कैसे बदलते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। ये हमारा अभी हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, 1 प्रोडक्ट मल्टीपल सैटेलाइट, हम इसको करेक्ट करने में ये बहुत मदद करेगी। दूसरा चीज़ है ओरिगामी सैटेलाइट, ना आप लोग जानते हैं जो ओरिगामी जो पेपर को फोल्ड करके हम जैसे को पंछी बनाते हैं, नौका बनाते हैं, ऐसे। बट इस बार ये ओरिगामी सैटेलाइट पे हम लेंस को फोल्ड किए तो लेंस जगह बहुत कम लेगी, और ये नई तकनीकी है और ये हम पहली बार डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ है PSLV में हम लोगों ने IRNSS नाभिक का रिसीवर लगाया है, सैक से बनाया हुआ, और इसमें जो रिकॉर्डर है वो भी हमारा सैक से आया है। मेरे भरोसा है जी एक्चुअली नीले देसाई साहब ने 35 लाख पर रिकॉर्डर खरीद के लाए थे, मैं देख के बहुत बनाया गया जी, आप सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर 35 लाख पे खरीद के लाए, आपको बनाना चाहिए। और हमने बनाया, और चंद कुछ हज़ारों पे ये बनी रिकॉर्डर, और अभी सभी PSLV में ये रिकॉर्डर जाएगी। और आप लोग को सभी को बधाई इसरो का, और ख़ास करके मेरे सहकर्मी जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारतीय अंतरिक्ष उपयोग केंद्र पे है, हम आप लोग को बधाई। आप लोग का काम में मेरा नाज है। धन्यवाद। Good morning, Chairman ISRO. Firstly, I thank PSLV project for successfully injecting CARTOSAT 2D satellite, the 5th in the CARTO series, into the desired orbit along with 103 co-passenger satellites. This 714 kg satellite is designed to deliver panchromatic and multispectral imageries for the user. Soon after the injection, the satellite solar panels have deployed, sun equation occurred, and our tracking center in Bangalore
has taken over the control of the satellite. One of the major development happened in the satellite is we have gone for indigenization. The complex structure of the payload camera has been realized indigenously by ISRO and has been successfully used here. In the coming days, a series of calibration testing activities we have planned on the satellite, where we are going to characterize different performance of the systems. Subsequently, satellite will be made available to the user. This satellite has given a lot of challenges to us. The first challenge was the target given by our beloved chairman. When the target of January relation target was given by our chairman, sir, our entire project team across all the center, with the support of all the center directors, rose to the occasion, and finally with a delay of 8 to 10 days, we have delivered the satellite to PSLV. On this juncture, I thank Chairman ISRO, sir, Chairman Sir ISRO for the guidance throughout the realization phase. Also, I thank Director Isaac and Central Directors of all the other centers for the untiring support. This satellite will soon join its family and it is going to form the constellation. This constellation is going to enhance the throughput of the satellite in terms of imaging and application areas with improved revisit. I am confident that this spacecraft will deliver quality products and will meet the demands of the user community. Thank you. Respected Chairman ISRO, Director Isaac, and all my team members, on behalf of Nano Satellite team, I thank all the DDs, Program Director, and SRC members, PSR members for guiding us to build this satellite, first 2 Nano satellite. This we have built it in 9 months' time. I thank once again. This year we started with enabling our Mars orbiter mission to survive the long eclipse duration, and then today we have the Mars orbiter mission going to function at least another 2 to 3 years unless we encounter any more difficulties. And then subsequently we had the cryogenic stage, Mark III cryogenic stage, going through a 50-second test, and as pointed out, day after tomorrow we have the long duration test coming up, and now we are targeting GSLV Mark II, then Mark III, and then a series of satellite activities and launch activities planned to ensure, like last year, this year also we have many exciting events coming up. Let me take this opportunity to congratulate the entire ISRO team for the wonderful job they have done, and keep it up. Thank you.